So hello everyone, this is Foundation of Business Management chapter number 1. So this is where we go. First we have to understand what is business, trade and commerce in chapter number 1. So business, trade and commerce में the very first thing we need to understand is the role of economic activities. Economic activities are those activities whose main purpose is to earn money, profit. Like I have make a chart here. If we can show you this one. Economic activities are performed for economic gain. Means यहाँ पे हमारा मकसद क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना ताकि हमको पैसा हो, कमाई आए. ठीक है. हर वो एक्टिविटी जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट बनेगा. लाइक लव कैन नॉट बी मेजर्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इट इज परफॉर्म रेगुलरली टू अर्न इनकम. इनकम अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. लाइक डोनेशन करना इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, लेकिन उसी डोनेशन का यूज करना एक सरकारी जॉब पाने के लिए दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज जहाँ भी पैसा यूज हो रहा है फॉर बिजनेस ऑब्जेक्टिव वो क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम कहाँ पे इंक्लूड करते हैं? नेशनल इनकम कैलकुलेट करना. एग्जाम्पल क्या है इसका? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं विच आर परफॉर्म फॉर इकोनॉमिक गेन. इट प्रोवाइड्स यू साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. जैसे डोनेशन करते हैं मंदिरों में, मस्जिद में, कैन बी चर्च, एनीवेयर. और जानवरों को फ्री में खाना खिला दिया, फ्री में इलाज कर दिया, किसी को पानी प्रोवाइड करा. जगह जगह पर हमको देखने को मिलता है कैंप्स लगे होते हैं, फ्री वाटर, फ्री फूड मिलने वाला. दैट इज फॉर नॉट अर्निंग प्रॉफिट बट फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. इट कैन बी मेजर्ड, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, बट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमेशा मॉनेटरी मेजरमेंट मिलना चाहिए. परफॉर्म फॉर लिमिटेड टाइम, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटीज थ्रू आउट द ईयर चलेगी. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्पेशल मोमेंट्स पे हम लोग करते हैं. डोमेस्टिक वर्क, सोशल वर्क. सो योर मदर कुकिंग फूड फॉर यू एट होम इज एग्जाम्पल ऑफ economic activity or non-economic activity? It is a non-economic activity. Whereas a teacher teaching at school is example of economic activities. Uh, doctor is checking you, so that is economic activity. Okay, guys. So next we have to discuss is coming back to the previous slide. So economic activities में we have exchange. Exchange means barter system, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं होता. एक सामान के बदले दूसरी सामान ले जाओ, exchange. ठीक है. प्रोडक्शन और परचेज. प्रोडक्शन होगा गुड्स और सर्विसेज का, प्रोडक्शन या परचेज, बेसिकली गुड्स. डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन होना इज नॉट इनफ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना, ठीक है, उसका मूवमेंट होना टू द person requiring that good or commodity, that is distribution is necessary. And then finally consumption, so it goes in a sequence. Division of income among factors of production. Do you know what are the factors of production? Land, labor, capital and entrepreneurship. Then satisfaction of needs and wants. Why do we perform economic activities? To satisfy our needs, our requirements, our wants. We need to use mobile phone, we need to have food, we need to live, we need electricity. So that is satisfaction of needs and wants. We used to do some work, which is an economic activity. So coming to the next slide. Business is a major economic activity. मेजर मीन्स बहुत बड़े लेवल पर होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसा कमाने के लिए, विच इज कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स. जहाँ पे हम क्या करते हैं, गुड्स मीन्स कोई भी सामान जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं एंड देन हम उसको सेल करते हैं.
लाइक मैंने एक केक बनाया एंड देन आई यूज्ड टू sell that cake. And services required by people. It is not only goods, we can also produce services. Like आज YouTube पर बहुत सारे YouTubers हैं, वो कुछ ना कुछ videos बनाते हैं, so that is a service, which is entertainment related. Business starts with production and it ends with your consumption. Making the finished products reach the consumer involves a series of steps. क्या एक स्टेप में काम हो जाएगा? नहीं. जो प्रोडक्शन है वो सीक्वेंशियल है, बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। जैसे पहले मार्केट में देखा जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उसके बाद हम वो पैसा अरेंज करते हैं उस प्रोडक्ट बनाने के लिए। देन फिर हम सोचते हैं कि कितना प्रोडक्शन करना है, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें, उसके बाद कैसे प्रोड्यूस करना है, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। फिर उसको प्रोडक्शन किया जाता है, फिर उसको कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है। So ये सारे steps are involved in production. The work of production of goods is covered under business studies, industry and the remaining activities belong to commerce. So production of goods किसके अंदर cover हो रहा है? In the your industry. जबकि remaining activities किसके अंदर cover होती है? Commerce की. In a nutshell, we call them business, which is a wider term and includes industry, trade, and commerce. So, ITC, industry, trade, commerce, they comes under business. Okay. So next we have the role of business in development of economy. Business, which includes trade and commerce, have played a vital role. अच्छा, इकोनॉमी में बिजनेस अगर है अच्छा तो इकोनॉमी डेवलप होगी या नहीं? यस. सो बिजनेस जिसके अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आता है, दैट हैज अ वाइटल रोल, important रोल. The archaeological evidences have shown that trading activities were the main reason behind the economy stand which were carried out by both water and land routes. ठीक है, पहले के टाइम पर जो ट्रेडिंग होती थी वो मेनली वाटर या लैंड रूट्स के थ्रू होती थी. Silk Road, maritime trade were quite prominent in transporting goods and commodities for the trading purpose. Which is not so important for you. The goods were traded both internally and to the foreign lands. So internally within the domestic boundaries within India भी सेल होता था, फॉरेन में भी जाता था माल, एक्सपोर्ट भी होता था, जिससे बहुत से प्लस इनकम, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती थी, मीन्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स. People were engaged in various economic activities like agriculture and domestication of animals. जानवर पाले जाते हैं, आज भी होता है. वेविंग कॉटन, ठीक है, फैब्रिक डाई होता है, क्ले पॉट्स बनते हैं, यूटेंसिल्स, हैंडीक्राफ्ट, स्कल्पटिंग, जो स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज, मशीनरी एक्सेट्रा. फैमिली बेस्ड वर्कशॉप्स, कारखाना होते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग वर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक लाइफ. देन मनी वॉज यूज फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट. जो पैसा आता था, सरप्लस आता था, इंडिया में बेच के, बाहर बेच के, दैट वॉज यूज टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द लोकल पीपल, ताकि वो और इंडस्ट्रीज सेटअप. वन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द यूज ऑफ ओल्ड सिस्टम्स लाइक हुंडी एंड चिट्टी, स्पेशली इन सदर्न इंडिया. There were documents used to safely transfer money from one person to another during trade. Banks was not that developed, तो इसलिए हम क्या यूज करते थे? हुंडीज एंड चिट्टीज. अभी ऑनलाइन नहीं था उस टाइम, तो हुंडीज एंड चिट्टीज वर यूज्ड. अब these instruments act like a promise or order to pay money. ठीक है, जहाँ एक नोट बना के दे दिया जाता था बाय इंडिया, और वो नोट जैसे ही हम बाहर यूएसए में जाके, लेट्स से यूएसए में गए, तो यूएसए में जाके जब हम उसे प्रेजेंट करेंगे तो हमको पैसा मिल जाएगा उसके लिए, बट पहले यहाँ पे पैसा जमा भी करना पड़ता है इंडिया में. तो दे वो प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे वाज अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं होती थी इसमें. डॉक्यूमेंट्स कुड बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू वैलिड नेगोशिएशन. इट वाज वैलिड. There was a need to create these types of paper because carrying cash over long distance was risky due to theft and robbery. चोरी के डर से हम कैश ले जाना इतना प्रेफर नहीं करते थे. The word hundi means to collect and was usually written in local vernacular language. It allowed safe money transfer and helped trade grow.
Later, the use of credit, buy now, pay later, and availability of loans made business activity even easier and widespread. So, there are various kinds of hundis that we have to study here. So, let's go with one by one. सबसे पहले वाली है धनी जोग दर्शानी. तो धनी जोग दर्शानी जो थी, इट वॉज पेबल टू एनीवन जो भी उसको प्रेजेंट करता था. हुंडी पे 10,000 टू द बेयर. बेयर मीन्स जो लेके आएगा, जिसके पास होगी, तो जो भी लेके आएगा उसको पैसा मिल जाएगा. नो लायबिलिटी ऑन हु रिसीव्स द पे. नेक्स्ट आती है सहजोग दर्शानी, जो कि एक रिस्पेक्टेबल पर्सन को, जो ड्रॉयर जिसको मिलना है पैसा, बेसिकली उसी की तरफ से एक रिस्पेक्टेबल पर्सन आके ही कलेक्ट कर सकता है. पे 10,000 टू एनी ट्रस्टवर्दी पर्सन सेंड बाय मिस्टर मेहता. तो मिस्टर मेहता अपने भी यहाँ पे किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन को भेज कर पैसा कलेक्ट करवा सकते हैं. दूसरा जोक दर्शान. देन फिरमन जोक दर्शानी. So Firman Jogdarshani was like payable to specific person named in the hundi. जिसका नाम होगा सब पैसा उसको मिलेगा. Pay 10,000 to Mr. राकेश शर्मा. तो क्या मिस्टर कमलेश पैसा रिसीव कर सकते हैं? The answer is no. देखन हर दर्शानी. Payable to the bearer who presents the hundi. यानी जो भी उसको लेके आएगा पैसा उसको मिल जाएगा. धनी जोग मुद्दती is like payable to anyone like your first hundi. आप मुझे उसका नाम बताया, फर्स्ट हुंडी का क्या था. बट आफ्टर अ फिक्स पीरियड. तो फर्स्ट हुंडी प्लस आफ्टर अ फिक्स पीरियड बना देता है क्या? धनी चौक मुद्दती. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है धनी चौक दर्शानी और धनी चौक मुद्दती में क्या डिफरेंस है? दर्शानी में पैसा ऑन स्पॉट मिलता है किसी को भी, मुद्दती में किसी को भी मिलता है, बट आफ्टर अ फिक्स पीरियड. एग्जाम्पल देख सकते हैं, पे 20,000 टू बेयरर आफ्टर 30 days. ओपन टू ऑल बट डिलेड पेमेंट. फिरमन जोग दर्शानी उसी का एक आता है फिरमन जोग मुद्दती, पेबल टू नेम पर्सन आफ्टर अ फिक्स टाइम. जैसे पेबल टू मिसेस नेहा जैन आफ्टर 60 days. So in ancient India, there was a favorable trade balance, means exports were higher than your imports. उसे क्या बोलता है? फेवरेबल बैलेंस होना. मतलब हमारे हमारे पास फेवरेबल बैलेंस है. किसके अगेंस्ट? सामने वाली कंट्री, इंपोर्टर कंट्री के अगेंस्ट. यानी इंडिया ने अगर मान लो अफगानिस्तान को गुड्स बेचे, तो अफगानिस्तान ने इंडिया से कितने मान लो अफगानिस्तान ने इंडिया से खरीदा 10,000 गुड्स, और इंडिया ने अफगानिस्तान से खरीदा 7,000. तो इंडिया के पास 3,000 का क्या है? फेवरेबल ट्रेड बैलेंस. यानी एक्सपोर्ट हमारे ज्यादा है इम्पोर्ट से, which benefit the local economy. The indigenous local banking system provides extra capital to trader, manufacturer and merchants. Moreover, एक और फायदा होता है इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम का कि पैसा इजीली मिल जाता है ज्यादा शर्तों के बगैर, helping them expand their business. Over time, commercial banks were established over to support trade, and agricultural banks were also set up to provide loans to the farmers. Ancient trade centers थे जैसे पाटलिपुत्र, पेशावर, तक्षशिला, सूरत. They were crucial for import and export. इंडिया mainly export क्या करता था? ये पता होना चाहिए. Spices, cotton, opium, meat and animals. While importing items क्या होते थे इंडिया के, जो इंडिया बाहर के मुल्कों से खरीदता था? Horses, silk, wine, and gold. India had different types of towns such as port towns, mercantile towns, and pilgrimage towns, which showed the prosperity of merchant communities. Business activities led to the growth of trade-related sectors like transportation, banking, finance, and communication. Indian merchants were well known in the ancient world, and India was often called Swarna Bhumi, the golden land, due to its prosperity. Travelers like Megasthenes, Pakshin, and Ibn Battuta praised India's wealth and economy, which was one of the largest in the ancient world, controlling a significant portion of the world's wealth. Then we have the major trade centers in India. अब I have tried कि इस चीज को हम थोड़ा easy कर पाए. ठीक है. So please need to pay attention to this. Patliputra, which is Patna now,
एक्सपोर्ट क्या करता था? स्टोन्स। पेशावर विच एक्सपोर्ट वूल एंड इंपोर्टेड हॉर्स। की इन ट्रेड बिटवीन इंडिया, चाइना एंड रोम। Takshila, which is an important trade center between India and Central Asia and is a hub for bank and education. Education. Takshila University must have heard. So it was famous for education. Indraprasth, major commercial junction था for routes leading all over India. सब यहीं से जाता था रास्ता. Mathura, known for its trade connected to southern India. Varanasi, famous for the textiles. Varanasi sari, especially gold, silk, and sandalwood. Mithila, traders sailed to South China Sea and set up trading colonies. Ujjain, which is known for exporting agate, muslin, and carnelian. Surat, key western trade port during the Mughal period, famous for the textiles and Surat hoodies. Kanchipuram, traded pearls, glass, and geostones with the Chinese. Madura, capital of the Pandyas, famous for pearl fisheries. Bro, major commercial center in western India, located by the Narmada River. So कौन से river के पास था? नहीं था. Kavripat, important trade center with connection to Malaysia, Indonesia, and China. And Tamralipati, major port with connections to the west and far east. So we have important one, British impact on Indian economy. So we have a little bit, you can say, reference of the British East India Company in India because it was somewhere connected with the trade. So East India Company used revenues from India, India से पैसे कमाता था to purchase the raw materials and spices. Okay, इंडिया क्या था? स्पाइसेस का एक्सपोर्टर. शिफ्टिंग इंडिया फ्रॉम एक्सपोर्टिंग प्रोसेस गुड्स टू रॉ मटेरियल while importing manufactured goods. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने फोकस करा सेल्फ रिलायंस बनने पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंट्रल प्लानिंग पे एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन की इंडस्ट्रीज. इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ पोस्ट इंडिपेंडेंस. India embarked on economic rebuilding with a focus on industrial development, technological advancement, and self-reliance. However, the challenges include a weak financial system, rising population, and high defense expenditure. तो ऐसा था इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद. इंडिया ने अपने आप फाइनेंशियल सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, पॉपुलेशन बढ़ गई थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर उसने फोकस करा. Economic liberalization. India ने face करा economic difficulties which leads to liberalization policy which aimed at stabilize, restructure and globalize the economy. So it was not that important. Now comes the most important part, which is the concept of business. So business refers to activities related to purchase, produce and selling of goods or service for profit. Profit कमाने के लिए हम purchase कर रहे हैं, produce कर रहे हैं सामान और उसे बेच रहे हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आता था? वर्क डन टू अर्न अ लिविंग. पैसा कमाने के लिए जो भी हम काम करते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. While the non-economic activities are done out of love or sympathy. Okay. So there we have some economic and non-economic activity. Is a short exercise. So you can do this exercise and we can later discuss this exercise also. But you need to first try it by yourself. Okay, so now comes characteristics of business activity. So business क्या होता है? Economic activity जिसका मकसद पैसा कमाना है. ठीक है. It is not done for love or sympathy like non-economic activity. फिर production और procurement. Business करने के लिए you need to sell some good. So you need to produce them first. So they can be your consumable items और capital goods. सेल और एक्सचेंज. बिजनेस में क्या होता है? गुड्स को बेचा जाता है, खरीदा जाता है. ठीक है. तो बिजनेस इन्वॉल्व सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर मनी. फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग फूड फॉर अ फैमिली इज नॉट बिजनेस, बट कुकिंग एंड सेलिंग द फूड इन अ रेस्टोरेंट में, जब मम्मी घर में बनाती है खाना, दैट इज नॉट बिजनेस. बट वही खाना अगर हम बेच रहे बाहर, दैट इज बिजनेस. रेगुलरिटी. बिजनेस रेगुलर बेसिस पे होता है. तो ये वन टाइम इवेंट नहीं होता.
like OLX पे बेच दिया, that is not business. Profit earning, the main purpose is to earn profit. ठीक है, प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है? सेल प्राइस बढ़ा के या कॉस्ट को कम करके. अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है, दैट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. यू आर नॉट श्योर अबाउट वेदर यू विल अर्न प्रॉफिट और नॉट. द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज नॉट फिक्स एंड देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ मेकिंग लॉसेस. Then comes the risk. Business involve risk due to factors like market में competition होता है, consumer का taste बदल जाता है, choices, preferences, there might be accidents, natural disasters, so risk cannot be completely avoided. नेक्स्ट आता है कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. सो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस बेसिकली जहाँ पे हम गुड्स प्रोड्यूस एंड सेल करते हैं. प्रोफेशन क्या होता है? जहाँ पे सर्विसेज दी जाती है. एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जहाँ पे हम एक एम्प्लॉयर के अंडर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं. तो मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस कैसे बनता है? एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो आइडिया लेके आता है कि बिजनेस स्टार्ट करना है और फिर वो बिजनेस स्टार्ट करता है और उसके लिए सारे फॉर्मेलिटी सारे वर्क करता है. तो एंटरप्रेन्योर के डिसीजन से ही उसको बिजनेस करना है, उसने डिसीजन लिया तो बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और वो जैसे ही लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करेगा बिजनेस सेटअप हो गया. प्रोफेशन कैसे बनता है? बाय मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लाइक डॉक्टर, सीए, ये सबको क्या मिलता है? एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है जिससे प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं. एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होता है? थ्रू एम्प्लॉयमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर या सर्विस अग्रीमेंट. नेचर ऑफ वर्क, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू पब्लिक. बिजनेस में क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विस बेचते हैं. प्रोफेशन में क्या होता है? मेनली एक्सपोर्ट सर्विसेज, एक्सपर्ट नेचर की सर्विसेज, एंड दे आर पर्सनलाइज. पर्सनलाइज मीन्स बंदे टू बंदा, अलग अलग पर्सन जिससे भी आप ले रहे हो डिफर करेगा. जैसे किसी एक बंदे से आपने खाना रेस्टोरेंट में बनवाया, उसका उसका अलग होगा, उसके हाथ का दूसरे बंदे का भी रिस्पॉन्स है खाने में, वो अलग होगा. दैट इज टोटली डिफरेंट. जैसे डॉक्टर का ट्रीटमेंट होता है, किसी की दवाई सूट करती है किसी की नहीं करती. तो प्रोफेशन में the services are personalized. Now employment, performing work according to service contract और employers रूल के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है अपनी मर्जी में. क्वालिफिकेशन, बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है. प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है, वो प्रोफेशनल बॉडी के अंदर आपको रजिस्टर करके लेनी पड़ती है. एम्प्लॉयमेंट क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉयर. रिवॉर्ड और रिटर्न, बिजनेस में क्या मिलता है? प्रॉफिट्स. प्रोफेशन में प्रोफेशनल फी होती है. एम्प्लॉयमेंट में सैलरी और वेज होता है. कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स किस पे करेगा? नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. बिजनेस जितना बड़ा है उतना ज्यादा कैपिटल. प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल होता है और एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल नहीं होता. रिस्क सबसे ज्यादा बिजनेस में, फिर उससे कम प्रोफेशन में, फिर नो रिस्क इन एम्प्लॉयमेंट or negligible amount of risk. Interest transfer. So transfer is possible with some formality. जैसे बिजनेस बेचा जा सकता है, प्रोफेशन में एक डॉक्टर अपनी सर्टिफिकेट नहीं बेच सकता है सामने वाले को, उसका प्रोफेशन नहीं खरीदा जा सकता. एम्प्लॉयमेंट में ये पॉसिबल नहीं होता. उसके बाद आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. ट्रांसफर इज पॉसिबल विद सम, ओके. कोड ऑफ कंडक्ट, नो स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट इज देयर. प्रोफेशन में वी मस्ट फॉलो अ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट and must follow employer's norm of behavior. The code of conduct is the way how you have to behave. So ये सबसे ज्यादा प्रोफेशन में होता है. Example, shop or factory comes under business. Legal, medical profession, CA, there comes under profession. Job in bank, insurance, जहाँ भी job कर रहे that comes under employment. Next we have business. So business activities are divided into industry and commerce. पूरा business industry, commerce और trade में divided है. और हर किसी का एक स्पेसिफिक रोल है इकोनॉमी के लिए. इंडस्ट्री, इंडस्ट्री इज रिलेटेड, इंडस्ट्री रेफर टू एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्स इनटू यूजफुल गुड्स. आटे को बेसन को कन्वर्ट कर दिया किसमें? पकौड़ी में. तो दैट इज कन्वर्जन ऑफ रिसोर्स इनटू यूजफुल गुड्स. स्टील को कन्वर्ट कर दिया कार में. इट इन्वॉल्व्स मैकेनिकल एंड टेक्निकल स्किल्स आर रिक्वायर्ड for producing and processing the goods and material. Industry broadly classified होती है primary, secondary and tertiary. Important. Primary जहाँ पे extraction होता है minerals का, production of natural resources and breeding of animals or plant. Agriculture they are also coming under primary industry. तो प्राइमरी इंडस्ट्री दो तरह की होती है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक. एक्सट्रैक्टिव मीन्स यहाँ पे रॉ मटेरियल हम नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे फार्मिंग, लंबरिंग, माइनिंग.
सेकंड है जेनेटिक इंडस्ट्री, जहाँ पे हम ब्रीड कराते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को और नया स्पीशीज प्रोड्यूस होता है, जैसे कैटल ब्रीडिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, नर्सरीज, दे आर आल्सो प्राइमरी इंडस्ट्रीज. Then we have the secondary industry. सो ये इंडस्ट्री क्या करती है, मटेरियल को जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने बनाया उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करती है. जैसे मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में क्या लिया, रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया स्टील वगैरह, और यहाँ से क्या हुआ, स्टील तो नहीं एक्सट्रैक्ट होता, डायरेक्टली स्टील बनता है, बट लोहा वगैरह आयरन ओर से निकला, फिर स्टील बनाया, तो ये सब, फिर उसी लोहे को हमने यूज करा किसमें, ब्रिजेस बनाने में, दैट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो कि सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है. टर्शरी इंडस्ट्री सपोर्ट सर्विसेज देता है, इसका काम बेसिकली सर्विस देना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, वेयर हाउसिंग, जहाँ पे खाना रखा जाता है, सामान रखा जाता है कि वो खराब ना हो, एंड कम्युनिकेशन. Then we have the next slide, I think, which is commerce include two main categories, trade and auxiliaries to trade. Trade means buying and selling of goods, and auxiliary to trade means transport, banking, insurance, warehousing, and advertisement. Then we have commerce. Commerce bridges the gap between producer and consumer, removing barriers related to place, time, finance, पैसा, and information. तो की एक्टिविटीज क्या हो गई कॉमर्स की, ट्रेड, ट्रेड मीन्स खरीदना एंड बेचना. बट ऑक्सिलरी टू ट्रेड में क्या आ गया, बैंकिंग एंड फाइनेंस आ गया, इंश्योरेंस आ गया जिसको हमें रिस्क से सेव करता है, वेयर हाउसिंग जो हमें सामान खराब होने से सेव करता है, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, जैसे मास मीडिया हो गया, marketing, banking and finance, providing funds and financial services, moving goods and providing communication channels. Trade and auxiliary to trade. Sellers and buyers ensure goods reach consumer, making large-scale production feasible. Then we have auxiliaries to trade. Then objectives of business, market standing, innovation करना, making something new, productivity, physical and financial resources, earning profits and social responsibilities.